about the chapter Human Eye and Colorful World. तो सबसे पहले the parts which are deleted from your final exams are human eye and the various parts and their functions and defects of vision, myopia, hypermetropia and presbyopia. Rest of the topics are there in your syllabus. So the first part which is there in the syllabus is accommodation. Now accommodation, what does it mean? What do you mean by the word accommodation? In general sense accommodation का मतलब होता है कि suppose मैंने एक होटल बुक किया तो उस होटल में पार्टिकुलर जो रूम है उसमें एकोमोडेशन कितने का है, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी. या फिर सपोज आई वांट टू हायर ए पार्टिकुलर कार, उसमें कितने आदमी के एकोमोडेशन है. हाउ टू एकोमोडेट समथिंग इन अ पार्टिकुलर प्लेस. तो इन रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन आई व्हेन वी डिफाइन एकोमोडेशन, वो एकोमोडेशन होता है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. मतलब जब हम अपने आंखों से दूर का कोई चीज, पास का कोई चीज हम लोग जब देखते हैं तो आई जो होता है ह्यूमन आई, हाउ इट इज एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ. दूर का दिखाई देने से उसका अलग से फोकल लेंथ एडजस्ट करना पड़ेगा, सामने का दिखाई देने के लिए उसको अलग से उसका फोकल लेंथ एडजस्ट करना. तो ये जो एबिलिटी है आई लेंस का टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन और सिंपली एकोमोडेशन. नाउ उस एकोमोडेशन के बेसिस पे वी कैन डिफाइन द फार पॉइंट ऑफ द आई एंड द नियर पॉइंट ऑफ द आई. फार पॉइंट का मतलब होता है, फार पॉइंट का मतलब होता है कितने दूर तक एक पार्टिकुलर ह्यूमन आई देख सकता है, कितने दूर तक एक ह्यूमन आई देख सकता है. फॉर डिफरेंट, देखो ये जो फार पॉइंट और नियर पॉइंट हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज फॉर द जनरलाइज, मतलब दोज हु आर यूजिंग स्पेक्टेकल्स और द कॉन्टेक्ट लेंसेज, उनके लिए ये चीज डिफाइन नहीं होगा. इट इज फॉर अ नॉर्मल आई. ठीक है. नाउ टू डिफाइन द फार पॉइंट ऑफ द आई वी विल से दैट द एबिलिटी ऑफ ए नॉर्मल आई टू सी टू द farthest point. मतलब द फार पॉइंट विल बी डिफाइंड एज इनफाइनाइट डिस्टेंस. जितना दूर तक हो सके आई एम एबल टू सी, दैट विल बी कॉल्ड एज द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई एंड इट इज इंफिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई. नाउ कमिंग टू द नियर पॉइंट ऑफ द आई. नियर पॉइंट का मतलब होता है पास से हम कितने दूर तक क्लियरली, पास से हम कितने एक पार्टिकुलर चीज को, हाउ मच फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस आई कैन ऑब्जर्व इट क्लियरली. तो द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज कॉल्ड द is also called least distance of distinct vision and it is 25 centimeter for a normal eye. तो 25 सेंटीमीटर तक I will be able to see. 25 से थोड़ा नीचे से 29, 24.9, 24.8 वो भी क्लियरली, बट जितने पास आओगे that particular thing will be what? ब्लर हो जाएगा. You cannot see like this only. दोनों आंखों को एक साथ करके ऐसे करके नहीं देखोगे. सो फॉर ए नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर. सो ऑल दिस कम्स अंडर एकोमोडेशन, द फार पॉइंट ऑफ द आई एंड नंबर 2 नियर पॉइंट ऑफ द आई. नाउ फॉर द फार पॉइंट इट इज इंफिनिटी एंड द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई. Is it clear? Clear हुआ ये part? Okay. Now next part, defects of vision, जो कि deleted part है. Then we have the next part which is called prism and refraction of light through prism. Now light के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि ग्लास स्लैब के जरिए कैसे लाइट पास होता है, पास होके डेविएट होके निकलता है. Now glass was the denser medium, air was the rarer medium.
तो ये पता है कि अगर रेयरर से डेंसर में लाइट एंटर करेगा, रेयरर से डेंसर में लाइट एंटर करेगा, व्हाट विल हैपन? द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीजिंग एंड द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. And again, when it is coming from denser to rarer, speed of light will regain the original part 3 into 10 to the power 8 meter per second, और ये it will move away from the prism. It will bend away from the prism. So when we consider about prism, prism is a lab material जिसके द्वारा एक फेनोमेनन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट. नाउ प्रिज्म इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ग्लास. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिज्म, बट इन आवर कोर्स वी हैव द triangular prism. Now if I think this particular ray of light incident on the surface of the prism, this particular part is called the angle of prism, denoted by A. Angle of prism A. Clear? Now अगर light, this is the incident ray, दिखाई दे रहा है सबको? This is the incident ray. Now this incident ray, this particular medium is air. It is the rarer medium. Now जब rarer medium से denser में जाएगा, it will bend towards the normal. Now if I consider this particular dotted line as the normal, so if it bend towards the normal, it will go like this. ठीक है? Now this incident ray and normal is making an angle here, which is called angle of incidence, and this is which is entering the prism after refraction. This is called the refracted ray, and the angle between the refracted ray and the normal is called angle of refraction, denoted by small r. Now अभी ऐसा है कि जब ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुआ, नाउ द लाइट रे विल नॉट स्टॉप हियर, यहाँ पे स्टॉप नहीं होने वाला. तो व्हाट विल हैपन? दैट पार्टिकुलर लाइट रे, इफ आई ड्रॉ अगेन अनदर नॉर्मल हियर, दैट लाइट रे again will bend away from the normal, as it is coming from a denser medium to a rarer medium. Now refracted ray के बाद जो लाइट निकल के जा रहा है, we call it as a emergent ray, and the angle between the normal and the emergent ray is called the angle of emergence E. Clear? So what is happening here now? The next part is, अगर मैं ये इंसिडेंट जो रे है इसको मैं यहां से एक्सटेंड करता हूं, और यहां पे मैं इस इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करता हूं, we see an angle which is formed here, and it is denoted by D, which is called angle of deviation. ठीक है? So from this part तुम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है? This part diagram will come and mention the different parts. कैसे? How the dispersion is happening, mentioning the different angles of the prism, which is refracted ray, normal, etc. Clear? So with the help of this prism, we can know the phenomenon of dispersion. Now this is how a prism is working when light is passing through the prism. So how the phenomenon of dispersion is happening? Now considering white light, for example solar sun rays. If I draw a prism here, say white light is passing, after refraction it is going. Now white light is composed of 7 colors we have already studied: Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Now these are the, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. V, I, B, D, Y, R. These are the different colors of light which is splitted after when the white light is passing through the prism. So this phenomenon of splitting up of white light, splitting up of light into its constituent colors, is termed as dispersion of light, or the band of colors which we see here is referred to as spectrum. Is referred to as spectrum. Is it clear?
is referred to as spectrum, and the phenomenon is termed as dispersion of light. Now, Isaac Newton, what he did, he thought that if he put a prism in this manner, say for example, एक prism को इन्होंने ऐसे बिठाया, तो नेक्स्ट वाले prism को उन्होंने inverted position में बिठाया. Now, he passed white light through it. It got splitted into 7 colors. Now again he thought that after splitting up of those constituent colors, दूसरे अगर inverted prism के जरिए अगर इनको भेजा जाए, तो they will also break up into other components of colors. But it was not so. Those component colors, when they passed through this inverted prism, they again, if it was a screen, they again give up the white light in the screen. Okay? So this was an experiment which was done by Isaac Newton to see that whether the components of the white light, अगर उनको फिर से prism के जरिए पास किया जाए, then they may be splitting up into another colors, but it was not so. It was found that the white light, it again came white light in the screen. Now, if we look, ये spectrum जो हम लोगों ने मिला है हम लोगों को with here, the red color the bending of the red light was lesser than the bending of the violet, indigo, blue, etc. Now, it happens because, see, whenever a particular wave, light is a form of wave, you have studied it earlier. Whenever light is moving through a path, maybe it is a vacuum or air, any type of wave has wavelength associated with that substance or the material. So as light is considered as a wave, the wavelength associated with violet is very, very less, and the wavelength associated with red is larger, bigger. So the particular thing is that, in one word I can say, those waves जिनके wavelength ज्यादा होते हैं, they will bend less, and those particular waves जिनके wavelength कम होते हैं, they will deviate more. On those basis, we can explain कि why does the sky appears blue and why does the sky appears dark to an astronomer. जब सन रे हमारे एटमॉस्फेयर पे घुसता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड के जरिए, the sun is coming, the rays of the sun is coming, and it almost requiring 8 minutes 30 seconds to reach the earth. Now, when it is entering the earth's atmosphere, हमारे एटमॉस्फेयर में there are denser layer, rarer layer, denser layer. तो say suppose if I consider these are the different layers of the atmosphere, एक जो particular layer है वो denser है, तो वहां पे क्या होगा, sun ray will deviate towards the normal. जो rarer है, it will bend away from the normal. This phenomenon is referred to as atmospheric refraction. Now, when we considering that why does the sky appears blue when we are looking all around, the phenomenon is due to as जो blue color of the light है उसका wavelength कम है, तो एटमॉस्फेयर के जो particles है ये blue color of the light को ज्यादा से ज्यादा एरिया में स्कैटर कर पाते हैं, जिसके वजह से स्कैटरिंग के वजह से जहां पे भी यहां पे देखो ऊपर देखो, एनी डायरेक्शन टुवर्ड्स द स्काई इज अपीयरिंग ब्लू टू द ऑब्जर्वर. बट इन केस ऑफ सनराइज एंड सनसेट, उस टाइम पे स्काई का एक पोर्शन रेड कलर हमको दिखाई पड़ता है. It is because the red color of the light has longer wavelength than the blue color of the light.
जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू स्कैटर दैट पार्टिकुलर रेड कलर ऑफ द लाइट टू ए लार्जर एरिया इन द स्काई, एंड बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन of longer wavelength of red light, it is being used as traffic signal, then backlight of cars and bikes, ताकि कम स्कैटर होता है जिसके वजह से दूर से foggy weather में भी वो रेड कलर हमको दिखाई पड़ता है. So this is why we see the color of the sky blue during when the sun is there, and even whenever you can see also during the thunderstorm, rainy season में जब बहुत मतलब एक लाइटनिंग होता है बहुत जोर से, कलर ऑफ द स्काई टर्न्स ब्लू. देखा है ना? what is that actually? That particular lightning is it is a source of light. तो ये जब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन होता है, when they can scatter the blue color of the light, as a result वो डार्क होने के बाद भी रात में जब बहुत कड़ाके का थंडरस्टॉर्म होता है, then we see that the color of the sky is somewhat blue. It is because the lesser wavelength of the blue color of the light. Now एस्ट्रोनॉट के आंखों के जरिए अगर मैं सोचता हूं why does the sky appears black, it happens because the astronaut और the जो जाते हैं ऊपर above the earth, they are outside the earth's atmosphere. Now there it is total vacuum, there is no atmosphere, nothing is there. So as when as light is passing through the vacuum, there are no particles to scatter those particular color of the light. That is why whenever an astronomer is looking through the sky, it is appearing black, as there is no atmosphere. It is not from the earth, it is outside the earth's atmosphere when he is looking. वो तो अगर आंख में रहेगा वो उसे भी तो ब्लू कलर दिखाई देगा, as we are seeing, if he is seen from the above the earth's atmosphere, atmosphere से बाहर. ठीक है? तो why does the sky appears blue? समझ में आया? Why does the sun appears red? Not sun, the sky appears red during sunrise and sunset. Clear हुआ? Why traffic signals use red light and bikes and cars backlights are red in color? Clear हुआ? समझ में आया तो? Okay. After that, another phenomenon arises due to atmospheric reflection. Now it is called twinkling of the star. Now what happens there? देखो, जैसे सन से लाइट सोर्स इज कमिंग टू आवर आईज, वहां से स्टार्स ऑल्सो दे आर एमिटिंग लाइट जो कि हमारे आंखों में आके गिर रहा है. नाउ इन रेस्पेक्ट ऑफ when we measure the astronomical distance, मतलब एक तारा है, nearest star after sun is Alpha Centauri, which is 4 light years away. Light year का मतलब होता है, क्लास 8 में ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ा था कि distance traveled by light in 1 year. तो जब वो पार्टिकुलर तारा जो हमें दिखाई दे रहा है, why it is twinkling? देखो, तारे को कंसिडर किया गया है as a point source. It is a point source of light. Now जब लाइट सोर्स आके अर्थ के एटमॉस्फेयर पे घुस रहा है, लाइट सोर्स, द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, सेम वे जैसे कि सनलाइट आने के बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर रेयरर में देयर आर मल्टीपल रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग. एक में इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो साइमल्टेनियस रिफ्रैक्शन के वजह से what happens when we look at the star, we see the apparent position of the star. We see the apparent position of the star. What is called the apparent position? What is called the apparent position? We see the apparent position of the star. Now what is meant by apparent position? Apparent position means, देखो, if you have to understand the apparent position,
नाउ से व्हेन यू इमर्स्ड, जब एक स्टिक को डुबाते हैं हम लोग पानी में डुबाने के बाद ऊपर से अगर हम देखेंगे तो द स्टिक अपीयर इज बेंडिंग. सपोज इफ आई कंसीडर a bucket of vessel of water. Now when I immerse the stick appears like this in a bent position when we see it from this particular position. If I am seeing the stick appears somewhat bent, ऊपर से अगर हम देखेंगे, but do you think that पानी के अंदर घुसाने के बाद वो स्टिक बेंड हो जाएगा? No. Why it is happening? Because light is entering from a rarer medium to a denser medium. ठीक है? तो this particular position of the stick is called the apparent position and this is called the actual position. Same phenomenon आर्थ के एटमॉस्फेयर के जरिए जब लाइट पास हो रहा है तब साइमल्टेनियस रिफ्रैक्शन के वजह से we are seeing the apparent position of the star. अगर आपके एटमॉस्फेयर को छोड़ के रॉकेट के जरिए बाहर निकल जाए, जब हम उस तारे को देखेंगे we will see the actual position of the star. क्योंकि स्पेस में there is no atmosphere, total vacuum. So from Earth when we are seeing the star, we are seeing the apparent position of the star. Or twinkling effect, why it is happening? Star is considered as a point source of light. जब वो लाइट हमारे आंखों में आके गिर रहा है, then we are due to the atmospheric refraction, phenomenon of atmospheric refraction, and the twinkling effect arises when we look at the different stars in the universe. Now, in opposite to that, when we look at the planets, we do not see the twinkling effect. Now it is being considered that जैसे तारा जो stars होते हैं, they are very far away from us. They are much at greater distance. But planets are much more nearer. If you consider Jupiter, Saturn, Mars, जो भी है, इस सीजन में Jupiter और Saturn is very close to the Earth. If you look at the evening sky, दो तारा देखना, ईस्ट से वेस्ट में, they rises in the east, sets in the west. Two planets are together. The brighter one is the Jupiter and the lesser brighter one is the Saturn. अच्छा, तो जब हम कंसिडर करते हैं प्लैनेट्स में, the planets are not considered as a point source of light. उसको कंसिडर किया जाता है collection of several points. तो जब those एक पॉइंट they are emitting the light, the total twinkling effect is nullified. Nullified का मतलब होता है they are cancelling out each other. तो these particular planets, when the light ray is coming, they are considered as a collection of points, and as the light sources are coming from different sources of those points, the total twinkling effect is cancelled out. जिसके वजह से स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. समझ में आया? ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज व्हाई व्हेन वी लुक एट द सन ड्यूरिंग द सनराइज और द सनसेट, एस तारे को जब हम नाइट स्काई में तारे देखते हैं, वी आर सीइंग द अपरेंट पोजीशन. So same thing applies for the sun also. तो जब सनराइज जब होता है, we are seeing the apparent position of the sun. The actual sunrise happens 2 minutes after, and the actual sunset happens 2 minutes before. तो जब हम सनसेट, जब इफ यू आर इन द होराइजन का मतलब होता है जैसे इफ यू आर सी बीच, एकदम प्लेन जो जगह होता है जहां से सनसेट, सी बीच के सामने जैसे सन, जो व्हेन इट इज सन इज राइजिंग, इट इज कॉल्ड द होराइजन. नाउ इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस कि
Due to the atmospheric refraction, we are seeing the apparent position of the sun. We are not seeing the actual position of the sun. Because of which, the actual sunrise happens 2 minutes earlier. ठीक है? We are not seeing the actual position जब sunrise हो रहा है. Again, during the sunset, the actual sunset already happened, but due to the phenomenon of atmospheric refraction, we are seeing the apparent position of the sun. We are not seeing the actual position of the sun. That is why it is called as early sunrise and delayed sunset. Clear हुआ? So, what were the parts we have discussed till now? Number 1, power, accommodation, ability of the islands to adjust its focal length. Number 2, near point and far point of the eye. What is near point? Yes, sir. The minimum distance up to which the eye can see clearly is called near point or least distance of distinct vision, which is 25 centimeter. Far point of the eye, the farthest point up to which the eye can see clearly is called the far point of the eye, and it is infinity for a normal eye. Then we have discussed about prism, Dispersion. angle of deviation, how it is produced, how the light passes through a prism, then how prism creates dispersion of light, the band of colors, spectrum, then the experiment of Sir Isaac Newton, जहाँ पे उन्होंने एक prism को पोजीशन में रखे दूसरे को इन्वर्टेड पोजीशन पे रखा था. He thought that the constituent colors can be again split up into different colors, but we got the white light again. Then we have studied about atmospheric refraction, जहाँ पे twinkling of stars, why do planets do not twinkle, early sunrise, delayed sunset, then why the sky appears blue, why the sun set during sunset or sunrise, we are seeing the red color of the sky. And the last one is, how does rainbow formation occurs? Now, rainbow formation is a phenomenon of natural dispersion. Now, during the rainy season, the sky is full of dark clouds. Now, what are those dark clouds actually? In them, those dark clouds, tiny water droplets are present. Those tiny water droplets acts as a natural prism. छोटे millions and millions of tiny droplets of water, ये natural prism के माफिक काम करते हैं. Now, when the sunlight passes through that particular tiny droplets, when they are passing through the tiny droplets, light enters the tiny droplets of water. एक में तो नहीं घुसता. There are millions of tiny droplets of water. When they are enter होने के बाद, what we see that light is entering from a rarer medium to a denser medium. So obviously what will happen? It will deviate towards the normal. Now अंदर जाने के बाद a phenomenon happens which is called total internal reflection. अंदर से it is called total internal reflection because अंदर से वो reflection होता है. Reflection होने के बाद, if I consider this is as a tiny droplet, light enters here, it coming here, again coming here, and goes like that. ठीक है? This phenomenon here, what it is happening, it is called the total internal reflection. Same thing happens for the numerous tiny droplets. Now, सार यहाँ पे होता है, and the formation of rainbow happens to the direction opposite to the sun. और जो फॉर्मेशन होता है रेनबो में, वही जो प्रिज्म में हम लोगों ने देखा था, बिकॉज व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. एंड दिस इज हाउ, बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड अगेन हियर व्हेन इट इज कमिंग आउट, द reflection is happening. As a result, we see the rainbow formation in the sky, which is opposite to the direction of the sun. Clear? Is it clear? So this was the last topic of this chapter. Thoroughly study the book. You don't have to leave any part. ठीक है?